अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू BTH लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम ने जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ सब्ट्रैक्टिंग वंस विथ रीग्रुपिंग। सो फ्रेंड्स, हमने सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट किया हुआ था। सबसे पहले मैंने आपको गाइड किया दैट व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग टेंस without regrouping, then subtracting ones without regrouping, and then subtracting tens and ones without regrouping. Now today's our topic is subtracting ones with regrouping. And now what is regrouping? I'm going to tell you with an example. This is regrouping. Okay, so let's take an example. What should I take? I will like to take here subtract. I will start with the very basic, like I will take the number 1, subtract 1 from the number 30. Now what will be our first step? I have told you many times that our first step should be to write the places over the numbers. Like I'm going to write the places here, zeros on the ones place and threes on the tens place, and here one is on the ones place. So now I'll write the places here also, 0 and 10. Now write the numbers here. Which number is on the ones place? 0 is on the ones place. I'm going to write here 0. Which number is on the tens place? I'm going to write here 3. 3 is on the tens place, so I'm going to write here 3. Now here which number is on the ones place? I'm going to write here 1. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे प्लेसेस लिखने का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ। लाइक अगर आप प्लेसेस नहीं लिखते, लेट्स सपोज, और आप स्टूडेंट को उसी तरह ऐसे ही गाइड करते हैं, लाइक मैं इसको रब कर देती हूँ प्लेसेस को, और मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आपने इसमें आई इस सम को आप इस फॉर्म में आपने लिखना है। दिस आर द सम ऑफ फॉर ग्रेड 1, ठीक है। वहाँ पे बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड दिस। यूजली सब कुछ बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, वो इस वन को यहाँ पे लिख देते हैं। सो और इस तरह से करके वो आपको आंसर सम निकाल देंगे। सो देयर विल बी चांस ऑफ मिस्टेक्स। सो इस मिस्टेक से बचने के लिए हम नंबर्स के ऊपर प्लेसेस लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर्स के ऊपर सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेते हैं। सो write the places ones and tens and ones. I'm going to write here ones, ठीक है। So but write places over here also. So now what you have to do, like my friend is saying that this is my friend, and my friend is saying that I need one more eraser, please give me eraser. So this friend is saying that I have no eraser, what should I have to do, and I want to give the eraser to my friend also. So अब हम क्या करेंगे कि हम हाउस वाली फैमिली को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने एडिशन में किया था स्टोरी को। यहाँ पे हमने लिख लिया, ये हमने हाउसेस बना लिए, दिस इज़ वंस हाउस एंड दिस इज़ टेंस हाउस। नो व्हाट विल डू द मेंबर ऑफ वंस फैमिली? द मेंबर ऑफ वंस फैमिली will knock the door of ten's family, and he will borrow one eraser from this family. So he will ask him that give me please one eraser. So when this family member will give one eraser to this, here was 0, and when this family member will give one eraser to this, it will become 10, and here I'll cut 3, I have given 1, so 2 will left here. Now the students will answer that, will ask the answers that sorry, ask the questions like ma'am, there were 0, so when there will 1 come, it will become 1 eraser, how it will become 10. So you should guide them that beta, this member will come have this member came from tens family, so we can't mix this family. This is the member of one's family and this is the member of tens family. तो जब ये दोनों members इकट्ठे हुए, it will make 110. So हम इसको ones
में कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट द मेंबर ऑफ वंस फैमिली, दिस इज़ द मेंबर ऑफ टेंस फैमिली. लाइक आई एम गोइंग टू राइट हियर, दिस इज़ द मेंबर ऑफ वंस फैमिली एंड दिस इज़ द मेंबर ऑफ टेंस फैमिली. सो व्हेन they will join tens family member to one's family member, it will become 110. ठीक है, so we can't consider as only one, but uh, this member has to do, this member has to do one eraser to this one. So let's suppose these are the eraser. I have to draw here 10 erasers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now I have to give one eraser, so I will cut this one eraser and I have to count the remaining eraser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So I'm going to write here the number 9. Now how many members was left here? Only 2 member, so I'm going to write here the number 2. So the result will be 29. So friend, this was the concept of subtracting ones with regrouping. regrouping क्या है अब इसमें? regrouping ये थी कि हमें ये अलहदा से ग्रुप्स बने हुए थे, ये वंस का ग्रुप था, ये टेंस का ग्रुप था, लेकिन हमें किसी की मदद करने के लिए, आप कहने लाइक अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए हमें दोबारा से रीग्रुपिंग करना पड़ी, हमें एक नंबर उससे बोरो करना पड़ा, टेंस की फैमिली से एक मेंबर को हमें बोरो करना पड़ा. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, subtraction ones with regrouping. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है इस मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस मैसेज के साथ कि सीखते रहें और सिखाते हैं.